You see my presentation? Yes, ma'am. We can. Yeah. So I'm started my screen. So in today's topic, I will cover invest on education. Already, sir explained me with what I am doing. So small introduction about me. Dr. Santhi Saravanan, my name, Director of Taru Financial Services and the founder and principal of Taru Fine Arts and Global Cultural Art Forum. Let's started my screen. Today's topic. Okay. I will start my quote with the Warren Buffett. Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Yeah. As a financial planner and a financial solution expert, we are regularly monitoring that savings is very important from the young age. We should educate the importance of money and savings to our children and as well as we, and trying them to start saving through a piggy bank scheme and as well as we are saving scheme. We should avoid procuring EMI for the luxury products such as a big refrigerator for a small family, a big TV, etc. If any of the electrical items got some problem, it could be repaired and used. Expansion should be reduced or minimized. Luxury items should be avoided. We need to focus on necessary items rather than luxury items to remove poverty. Try to learn recycling and reuse of the objects. So let's explain about elaborate in further presentation. Now I started here and practical and question answer section like that. So now I started my theory. Every month, the first expense should be monthly savings. 30% of the income should go for monthly savings. Savings could be in the form of insurance and long-term investments. Now I've started my another presentation. 70% of the salary should be used for the monthly expenses and the 20% of the salary should be ordered for the next month expenses. Salary king will behave three types, like a king for the first 10 days, like a soldier for the next 10 to 20 days, like an employee for the last 20 to 30 days. It's not about priorities of workers. I will explain in the money mode. Okay. So let's start on my today's topic, the do's and don'ts of investing in education. Today explained about invest on education. Today topic. Let's to travel in our presentation. What is the importance of investment in our personal life? Setting aside money every month for investing will keep you spending that money on unnecessary expenditures. Investing your money demonstrates a concern for the future and a discipline that could make a difference during the retirement years. And
what are the three benefits of investing? Benefits of investing: potential for long-term returns. While cash is undoubtedly safer than shares, it's unlikely to grow much or find opportunities to grow in the long run. First one is outperform inflation. And now I am explaining theory portions, and after that we explain in the question answer section. We'll discuss with many questions present in our presentation. First one is outperform inflation. Second one is provide a regular income. Third, tailor to your changing needs. Fourth, invest to fit your financial circumstances. What is the importance of savings and investment? Savings and investing are important parts of a sound financial plan. We are day-to-day regular life. We are educated as well as financial. How much important we are know. So financial plan, we are traveling a regular income in savings and investing only proper guides our day-to-day discipline. Only it's possible. Whereas savings provide a safety net for unexpected expenses. Investing in a strategy for a building wealth. Let's start importance of investment. First one is longer life expectancy. We must travel along. Our motto is long term in our long term proper guidance of our income, wealth, health, as well as all good positive vibes. So longer life expectancy. So income is how much important we all know. Inflation. Inflation means we know. Inflation means now we are like a 10 years boy going to the 20 years, like 1 kg is 1 kg onion or potato or something else, grapes like that. Grapes, we are taking grapes. Okay, 1 kg grapes is equals to 100 rupees today. 10 years boy purchase means in inflation 28th year, how much you purchase? Like 200. So this is the inflation. And last one is taxation. So we are regularly, we are educated also, some taxation also we taken. So how much you take in taxation, we will explain in further presentation. Next one is interest rates. Interest rates like 8% to 12%, like gradually in short term and long term investments, and insurance and mutual fund markets. Anything else, interest rates fluctuating. About our risk appetite, we take an interest rates like an RD, saving deposit. It's widely in savings mode in government sectors like that, and piggy bank like that. We are taking in the interest rates. So why is it important to invest in our future? So in our future, how much important to invest? Having sufficient funds in our investments could enable the leave a job to take a break for a few months. It could also enable you to do or buy things that you want, or to take advantages of opportunities that arise, such as being able to pay for education or start a business. So sudden we make any risk appetite means invest only we take for a bone, like a bone in our life. So we must travel anything else, and we
taken we now our child go to the higher education means investment. How much important we are know. So we take something gradually increase the business or start a business means how much is this business to start in widely and broadly means investors how much important we are know. So what are the advantages and disadvantages of investing? Advantages for investors including advanced portfolio management, dividend reinvestment, risk reduction, convenience, and fair pricing. This is the advantage mode. Disadvantages include high fees, tax efficiency, poor trade execution, and the potential for management abuses. So we are advantage disadvantage. Why we taken means in investing we are taking the advantage. We know about investing how much important we know, but some people have poor knowledge in our investing means. So affect in only that person only know that overall family are affected. So this is the disadvantages of investing. What are the objectives of investment management? So first one is to keep funds safe and secure, to grow our funds exponentially, to earn a steady and additional source of income. So how much it's become an inflation. So we make in insurance or any mutual fund markets, we go to the regular return means it's taken we make 1 lakh plan means we must in 10 years it's completely come in 10% improvement. This is the additional source of income up to retirement after that also our family. Next one is minimize the income tax burden. So we are know in insurance, minimize income tax burden up to 1 lakh. We are in income tax reducing in insurance. We have taken ATC policy. Retirement planning. We are we must travel in our society in our joint family or joint family, but income how much important in our life we know about in grandma grandpa anything else. We have some money means all must money, education, most important thing discipline. These three things in our environment we must travel lifelong in good source. So next one is minimize income tax burden, retirement planning, meet financial goals. Meet financial goals. We are no some short term plan, long term plan, mid term plan, anything else. Short term plan means we taken one bicycle. I want means we must take some 2 to 3 years. We take that particular resource regular. Savings more, we must goals will achieved in bicycle. 5 terms or 5 years or 10 years means we taken we are I want this home. I want to own house. I want to build like that. It's absolutely possible in financial goals. In 20 years, after absolutely in retirement planning and we abroad plan, anything is possible in meeting financial goals. So I will start one video. Just I am sharing. So this is a Benjamin Franklin quote. A penny saved is a penny earned. We all should try to save money before
before spending to overcome poverty. Thank you. Now started in question answer sections. Anything else we make in question answer section in while we will explain. Thank you, Santhi ma'am. If any educator wants to ask any question, then unmute, then can mute yourself and ask your questions. Thank you very much, sir. Thank you very much, ma'am, for organizing such a beautiful webinar. And ma'am, it is a great topic on which we have organized the webinar today, because you know that educators should know about financial literacy as well, and how to manage their finances. And it is a great topic, ma'am. And even I believe that we should pass on the learning of this webinar to our students as well, because financial literacy is a very important part of our life, and everybody should know it. Actually, you know that strategic thinking is very important. Sometimes we just caught up into earning money, but it is rare that we invest strategically. So today's topic was great, and thank you very much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir and madam, for this wonderful. Though I joined late, but what you have said about the investment, it should be safe. It should be safe. Like you told, it can be on the like insurance, like they are the safest one, like the RDs, they are the safest one, and the fixed deposit. I have done, I am doing in the same way, like you have told. I just keep my 50% in the safe, like my insurance, my health insurance, or if I talk about my FDs, and 50% is on my mutual fund, like small cap, mid cap, and large cap. I'm investing in such a way, like for example, if I get some loss in my this thing large cap, so I can make it from my small cap, or from small cap, or then I can make it from large cap. And that is very, very good, because we don't plan our retirement. We just think like we are mortal, we will not be retiring. But financial planning is very, very important for people like us who do not have any pension schemes like such. So investing is a very good idea, and we can be safe and happy and enjoy the life as we are enjoying today. And thank you so much for this insightful session. And I took each and every word which you have said, and they are so meaningful in today's scenario. Thank you so much, ma'am, and thank you, sir, for this such a beautiful insight, and too much to learn from all these webinars. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. आप में से कोई और educator, if he wants to ask any question, then can unmute yourself and ask your questions. This time we have a question answer session for all. Yes, ma'am. Okay, so I am started one topic in invest on education, because I want to fulfillment in our education. It's important. Very much for your blessings and congratulations. Thank you. And I will start in invest on education in budget mode. How much important in family? In family, how much important in day-to-day life? Regular patterns. We must take one account tab sheet or Excel, anything else. We must take a proper account maintenance. It make a good discipline. In discipline means like a discipline form. We must travel the where to go and where I'm left the money, like that. We must know about where, when, do or not. We must know about in account sheet. So it's a very good discipline in our regular day-to-day life. In invest on education is first point I want to tell here. Next one is, so insurance I want to explain
in rightly things. Insurance, we know insurance means only deadline like that. Nothing. It's a good corpus of about retirement planning, fulfillment of education, and fulfillment of home loan. Anything else is possible in insurance as well as mutual fund markets also. But I will suggest the most important in our educate. Insurance is most important in we must like a milk card, anything else, anything milk card like that. Gee, kindly chat with me is better. Anything else is good. Okay. So next, I will like a budget. How much important I will explain in previous. So milk card like and whatever like provisions, insurance also is most important in our future. But we must take care. 10% to 20% in our savings is most important thing in our savings mode. Like a long term, short term, mid term. We must RD like we must earning some amount like 10,000. I am earned means 20% means 2,000 to 2,500. We must take and first responsibility in high class. We must take and in the savings mode. Is most important thing in our for next month priority. So now I am traveling here today month means next month is possible. We are not know, but safety is most important thing in our future. So and then I want to know general insurance and mediclaim. We must travel in. I don't want mention thing a pandemic like that, but how much mediclaim is most important thing we are now realizing general insurance and mediclaim purpose. So in mediclaim purpose, I'm not lot of people gained that mediclaim purpose is fulfillment the pandemic situation. Some problem means you solve the problem in mediclaim. So next one is mutual fund. We must take a little bit. We must take a responsibility in our mutual fund markets. Not a huge investment in lower income or middle income. Upper class is okay, but upper middle class also we must take a 10% to 20%. We must take a risk in mutual fund markets, not an 80%. Is a most important thing. 80% insurance. We must travel most like an driving license card like that. We must insurance card also most important in our life because health issues we are not know about our health issues. So we must like God blessings. We are travel day to day life, but 3 to 4 months some health issues means we must take a risk appetite. Before that, insurance is most important thing. Next, I want to share something important else means savings and general insurance are almost covered. So anything else? Question answer, say anything else? Yes, respected educators, अगर आप लोग कोई भी क्वेश्चन अगर अपना पूछना चाहते हैं, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं. शांति मैम हमें उन क्वेश्चंस का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं मानता हूं कि वो अच्छे से आंसर कर पाएंगे इस चीज का. और इस बीच वेलकम रविशंकर सर, हमारे बीच IDYM के फाउंडर जो है मिस्टर रविशंकर सर हमारे बीच में है. काफी दिनों के बाद बीच में हमारे पधारे हैं. वेलकम सर. नहीं बॉस, मैं हर दिन आता हूँ आपका यूट्यूब से, मैं देखते रहता हूँ.
मैं इसलिए आज मीटिंग में आया था कि बस मैं ये देखना चाह रहा था कि मैं आपका यूट्यूब देख रहा हूँ बहुत देर से, पर Okay. मैं जो शांति जी का जो प्रोफाइल करना मैं चाह रहा था कि वो पूरा बड़ा दिखे, वही ऑप्शन चेक करने के लिए मैं अंदर आया था कि आप उसको पिन कर दीजिएगा तो सबको बड़ा दिखे। हाँ, एक्चुअली रवि सर क्या है कि मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ इसको लाइव, उसके लिए अलग से वो है, तो मैंने उनको मैसेज कर दिया है, अच्छा, है ना? Thank you. तो Nandini. जो गूगल मीट को होस्ट कर रहे हैं ना, वो कर सकते हैं पिन। बिल्कुल नहीं कर दिया, सर आप उनको पिन कर सकते हैं, उनको आप पिन कर सकते हैं। कर दिया मैम ऑलरेडी ना, हो गया प्रॉब्लम फिक्स वो। नाउ जब वो बात करेंगे ना तो यूट्यूब में क्या होगा कि उनकी फोटो बड़ी है। राइट सर, अभी सही है सर, मैं चेक कर पा रहा हूँ सर अभी। इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग हमारे छोटा जो छोटा काम, आप लोग आप इतना मेहनत करते छोटा सा हम लोग कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। एग्री सर। So, अगर अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो हमारा जो एक हर वेबिनार के बाद एक टॉक शो का हम लोग रखते हैं, जिसमें हमारे एडुकेटर्स के साथ हम बहुत सारी बातें करते हैं, जिसमें उनके लाइफ में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, मैं पर्सनल लाइफ में नहीं कहूंगा, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व आउट करें और आप लोगों के साथ वो सारी की सारी चीजें शेयर कर पाए जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दे सकती है। हमारे एक्सपर्ट हैं इसमें, शारदा मैम है, हमारे जो है गरिमा मैम है, ये दोनों ऐसे एक्सपर्ट हैं हमारे कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनके पास में होता है। तो आप लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप अपने एजुकेशन सेक्टर के अंदर फेस कर रहे हैं, कोई आप लोगों को क्लास से रिलेटेड है, कोई किसी स्टूडेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या स्कूल मैनेजमेंट के साथ कोई आपका जो है किसी तरीके का डिस्प्यूट है, तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स को आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यस शारदा मैम एंड गरिमा मैम। Thank you, sir, for this honor. Really, I'm feeling Thanks a lot, sir. बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत यस सर, कोशिश करेंगे मैं और गरिमा मैम की जो भी हम लोग कर पाए आंसर दे पाए जरूर देंगे। और मैं तो पूरा प्रैक्टिकल पे विश्वास करती हूँ, जो प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं ऑन ग्राउंड। और गरिमा मैम को भी देखा है कि वो हमेशा ऑन ग्राउंड सॉल्यूशंस मिलता है। आप लोग प्लीज पूछिए और हम लोग अपनी पूरी ऑनेस्टली कोशिश करेंगे कि आपको आंसर दे पाए। आई थिंक शारदा मैम, इस तरीके से हमारे एडुकेटर्स थोड़ा सा पहले जो है ना, थोड़ा सा हेजिटेशन होती है कि हम लोग पूछे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज मेरी एक बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग रही हमारे लक्ष्मीकांत सर के साथ में, और जब हम मैं और लक्ष्मीकांत सर बात कर रहे थे तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे आइडियाज सर ने आज शेयर किए। ये कभी मीट पे नहीं करते थे, कभी मीटिंग्स जो हमारी ऑनलाइन मीटिंग होती थी कभी शेयर नहीं करते थे। आज जब हम फेस टू फेस बैठे और सारी चीजें थी, क्योंकि आज आप लोगों ने देखा होगा मैंने क्रिएटिव बहुत लेट शेयर किया है, तो लगभग हम लोग 4:30 तक एक दूसरे के साथ थे। तो ऐसे ऐसे आइडिया सर ने शेयर किए कि एसोसिएशन किस तरीके से हमारे एडुकेटर्स को और किस तरीके से स्कूल्स को हेल्प कर पाएगी। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने शेयर की। तो उसमें एक टॉपिक आया कि बुक्स का जो करिकुलम है, जो हम लोग करिकुलम हम अपने स्कूल्स के अंदर लगाते हैं, चाहे वो प्राइवेट पब्लिशर है, चाहे वो दूसरा पब्लिशर है, वो बुक्स को, चाहे वो एक रूरल एरिया के अंदर स्कूल है, चाहे वो एक जो है सिटी के अंदर स्कूल है, चाहे मेट्रो सिटी के अंदर है, सभी बुक्स को वो एक लेवल की वो प्लान करके चलते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि भाई एक थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए किसी सिटी का या कुछ और चीज करके, किस तरीके से हम उसमें और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के जो है उनको यूजफुल बना सकते हैं, किस तरीके से वो टीचर्स के लिए इजी रहें, कैसे वो अपने लेसन प्लान को जो इजीली लेसन प्लान बन के आते हैं, लेकिन वो इतने टफ तरीके से, इतने कॉम्प्लेक्सिव तरीके से वो डिजाइन किए होते हैं कि टीचर्स को उसी में सोचने में जो 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो कैसे हम वो चीजें प्लान कर सकते हैं, इसमें मैं आप लोगों की राय लेना चाहूंगा। सर जो करिकुलम है वो हमें इजी, सिंपलेक्स टू कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम बिल्कुल सिंपल चीज लेकर तब उसको थोड़ा थोड़ा लेवल हाई करते जाएंगे। आप जैसे किंडरगार्टन ही लिया, किंडरगार्टन में हमने कोई भी एक टॉपिक उठा लेते हैं, सपोज नेबरहुड ही उठा लिया हमने,
ठीक है। नेबरहुड में हमें अगर हमें नर्सरी में वो रखना है तो उसमें हमें सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को बतानी है। फिर अगर हम उसको एलकेजी में ले आए तो थोड़ा सा बच्चा वर्ड बोलना पढ़ना सीख जाता है, उस लेवल का लाए और फिर यूकेजी तक लाकर उसमें फिर और सारी चीजें सेंटेंसेस इंक्लूड कर दें। तो इस टाइप से हमें करिकुलम डिजाइन करना पड़ेगा कि कोई भी बहुत छोटा से छोटा भी टॉपिक बहुत इजी लैंग्वेज में करके उसके बाद उसको टिपिकल उसमें जा लेके जाएंगे। और ये लेसन प्लान की जैसे आपने बात करी, आजकल इतना इतना मतलब वाइड वो बना देते हैं कि वो बवंडर लगने लगता है, टीचर उसे देख के ही डर जाती है। पता नहीं क्यों क्या दिखाना चाह रहे हैं। अभी हमारे यहाँ मैट्रिक्स नाम दिया था उसको, जबकि ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है उसके अगर उसके हम अकॉर्डिंग बनाए तो बहुत अच्छे से लेसन प्लान बन सकते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर डिजाइन हो सकते हैं। लेकिन वो मैट्रिक्स ऐसे बना दिए कि उसमें 15 तो हेड्स रख दिए। अब वो 15 हेड में टीचर बेचारा वीकली बना रहा है, इतना इतना मतलब वो पजल हो जा रहा है। उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, उसमें एक्टिविटीज भी हैं डेली की। वो पेरेंट लेसन प्लान एक अलग जा रहा है, टीचर लेसन प्लान एक अलग जा रहा है। तो ये तो जो मतलब जो करवाता है ना, मुझे लग रहा है उसको खुद ही नहीं बनाना आता कि क्या होना चाहिए, क्योंकि टीचर की जो एनर्जी है वो उन लेसन प्लान को बनाने में जा रही है इन स्पाइट ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स। टीचर अपना जो उसकी जितना भी उसके एफर्ट्स हैं वो बच्चों के हित में और बच्चों की पढ़ाई में लगने चाहिए, उसमें ना लगकर उस टीचर का दिमाग लग रहा है उस लेसन प्लान को बनाने में। तो बहुत इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, हेड्स लिमिटेड होने चाहिए। टॉप सब्जेक्ट जैसे डेट आ गई, सब्जेक्ट आ गया, टॉपिक आ गया, क्लास वर्क, होमवर्क, असाइनमेंट जो आप दे रहे हैं वो आ गया। उसमें इतना सारा वाइड करने की मतलब मैं नहीं समझती कि कोई जरूरत है। टीचर्स की सारी एबिलिटी उसमें जा रही है। मैम मुझे क्या लगता है कि जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा वो करना चाहूंगा क्योंकि शांति मैम हमारे बीच में है। शांति मैम, इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? हाउ कैन वी डिजाइन आवर लेसन प्लान्स इजीली? Easily means we must day to day. I am suggest traditional route is very unique and very effective manner. Like book reading. Book reading is in a few. I am seeing my son also many times only laptop only using, but I have not suggest that thing. Traditional book and absolutely pen is make a good effect things in our note, because my regularly I am day to day one book I am writing in my any points and valid points we must take a notes. Is most like we must to know in past 10 to 20 years before we are child means we make a class work like that. We must now the class work is missing. So class work is most important thing in our. I am suggest only a traditional. Traditional is the very good thing I am taking in my students, or as everything is possible in a future, but traditional only is everlasting. But so we must take handwriting, like an handwriting skills is most important thing, and any online section also we must take some important skills to learn educate to children. Writing is very important thing. Notes, classwork, handwriting, and alphabets. In alphabets, we know English, but Hindi and Tamil we must many alphabets so we must kana chanata like that. We must, but some students we are 6th standard students also know nothing to know about kana chana also. Is so much worry about that. So we must take an kana chana like that. We must take a traditional route, and writing is most important thing. Yes, ma'am.
मैं एक बार थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट कर दूं, उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे और बहुत सारी चीजें हम लोगों को एक दूसरे से सीखने को मिलेंगी। मैं सभी एडुकेटर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार अपना फीडबैक फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि पिछले वेबिनार में जो हमारा पिछला वेबिनार था खती टंडन मैम का, उस वेबिनार में इतना अच्छा मेरे को लगा, इतना अच्छा मुझे लगा, मैं अगर कहूं कि लगभग 100+ एडुकेटर्स उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने ज्वाइन किया था। और जब मैं सर्टिफिकेट डिजाइन कर रहा था तो वहां पर 207 एंट्रीज थी। तो मैं आप समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ठीक 15 मिनट के बाद हम उस फीडबैक फॉर्म के जो है रिस्पॉन्स को जो है एक्सेप्ट करने की उसको सेटिंग को हम चेंज कर देंगे। तो उस टाइम आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से मैं नहीं मानता कि सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू रह जाती है। जिन सर्टिफिकेट्स को जिन एडुकेटर्स ने ज्वाइन ही नहीं किया, कुछ सुना ही नहीं, और ऐसे एडुकेटर्स अगर उनको लेते हैं, और 207 तो एंट्रीज थी, उसके बावजूद कुछ ऐसे भी हमारे एडुकेटर्स थे जिन्होंने वेबिनार ज्वाइन किया, लगातार रहे, किन्हीं रीजन से फॉर्म फिल नहीं कर पाए, उनके बाद में मेरे पास आ रहे थे तो लगभग 10-11 वो भी थे। तो मैं सोच रहा था कि क्या हमारा गूगल मीट इतना जबरदस्त हो गया है कि भाई उसमें 200+ जो है हम ज्वाइन करवा पाएंगे, तो है ना। तो इसको दूसरे वे में ना लेके एक सिंपल, जैसे मैंने बोला है, आई थिंक उसी वे में आप लोग लेंगे। तो इसको आप फिल कर दीजिए, उसके बाद हम लोग ज्वाइन करेंगे वापस, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हम एक लंबा टॉक शो रखते हैं जिसमें हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रविशंकर सर, आपसे भी मैं इस बारे में फीडबैक लेना चाहूंगा अगर आप यहाँ हैं। जी यस सर, बोलिए। उससे पहले मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। मेरा क्वेश्चन है, क्या जो करिकुलम है वो स्टेट के अकॉर्डिंग डिजाइन होना चाहिए या एक नेशनल के नेशन के अकॉर्डिंग? मुझे पूछ रहे हैं सर? जी सर, आपसे ही। हाँ, तो मेरा देखिए, डिपेंड करता है कि जैसे अभी का जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, तो अभी हम लोग जो है आईआईटीज और नीट पर ज्यादा बच्चे जोड़ लगाते हैं कि हमें आईआईटीज में जाना है या तो नीट में जाना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दोनों करिकुलम अच्छी है, बट डिपेंड करता है हम किस ऑप्शन को हम अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इफ वी आर लुकिंग फॉर नीट एग्जाम, the best option is to go with CBSE NCERT patterns, because NCERT, the description is very good, and if the teacher is teaching from that point of view, it is very easy for a student to crack NEET exam. But if you come to in the point of IIT JEE, where thinking matter a lot. When somebody want to get into IIT, it's not about you just by heard something and just go to the exam and same question will come and you are going to write it. That is not going to happen. So if you think in that way, like I can just, I come from Bihar state, and if you see the result of every year of IITs, we have so many students coming from Bihar, and in UPSC also. The reason of getting a lot of results from Bihar is that the students are more attached to